डेली फार्मा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। इसमें कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं सल्फेट की लिमिट टेस्ट में? एपरेटस नेजलर सिलेंडर, ग्लास रॉड एंड स्टैंड। इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज based on the reaction of soluble sulfate with barium chloride. Reaction of soluble sulfate with barium chloride to form barium sulfate in presence of dilute hydrochloric acid when appears as turbidity. Reaction of soluble sulfate with barium chloride in presence of hydrochloric acid to form barium sulfate and which appears as turbidity, opalescence. To prevent supersaturation, a small amount of barium sulfate BaSO4 is added. रिएक्शन देखेंगे SO4 -2 plus BaCl2 barium chloride in presence of HCl hydrochloric acid to form barium sulfate BaSO4 plus 2Cl minus. Barium sulfate forms precipitate. प्रोसीजर देखेंगे टेस्ट और स्टैंडर्ड। टेस्ट सैंपल एंड स्टैंडर्ड सैंपल। टेस्ट सैंपल में क्या ऐड करेंगे? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन नेजलर सिलेंडर। एंड स्टैंडर्ड में 1 ml ऑफ 0.1089% WIV वेट बाय वॉल्यूम ऑफ K2SO4 पोटेशियम सल्फेट इन नेजलर सिलेंडर। ये याद रखना। स्टैंडर्ड में क्या यूज़ करते हैं? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। देन ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिमेनिंग प्रोसीजर सेम है दोनों में भी। ऐड डाइल्यूट 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन डाइल्यूट सॉल्यूशन अप टू 45 ml विथ वाटर। स्टैंडर्ड में भी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ 45 ml विथ वाटर। देन टेस्ट में ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट। देन स्टैंडर्ड में भी ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट। एंड ऑब्जर्व द ओपेलेसेंस। लास्ट के है बेरियम सल्फेट ऐड करेंगे, देन ऑब्जर्व द ओपेलेसेंस। सेम दोनों में भी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व टर्बिडिटी एंड कंपेयर। टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। ये टेस्ट सॉल्यूशन, ये स्टैंडर्ड, दोनों की टर्बिडिटी कंपेयर करेंगे। इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस बाय टेस्ट सैंपल इज लेस, टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी लेस देन स्टैंडर्ड सैंपल, द सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट। टेस्ट की टर्बिडिटी का लो हो देन टेस्ट की टर्बिडिटी लो हो देन स्टैंडर्ड, देन पासेस द टेस्ट। टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी ज़्यादा हो देन फेल्स द टेस्ट। इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस बाय टेस्ट सैंपल इज मोर देन स्टैंडर्ड सैंपल, द सैंपल फेल्स द लिमिट टेस्ट। एप्लीकेशन। द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन IP: कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम लैक्टेट, डेक्सट्रोज, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ETC। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या यूज़ करते हैं? हमने अभी देखा था क्या यूज़ करते हैं? K2SO4। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे पोटेशियम सल्फेट, सेकेंड कैल्शियम सल्फेट, थर्ड सोडियम सल्फेट, फोर्थ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सही आंसर क्या है? पोटेशियम सल्फेट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पोटेशियम सल्फेट एडेड इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट फॉर। फर्स्ट ऑप्शन एसिडिटी, सेकेंड बेसिसिटी, थर्ड सेंसिटिविटी, फोर्थ नन। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट टू प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन ऑफ BaSO4 a small amount
of which of the following is added? फर्स्ट अल्कोहल, सेकेंड एल्डिहाइड, थर्ड ईथर, फोर्थ एसीटोन. हमने देखा था क्या ऐड करते हैं? अल्कोहल. अल्कोहल इज एडेड टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन ऑफ BaSO4. नेक्स्ट क्वेश्चन. The composition of barium sulfate reagent used in the limit test of sulfate is: first, barium sulfate, sulfate free alcohol, and ferrous sulfate. Second option, barium chloride, alcohol, potassium chloride. Third, barium sulfate, alcohol, potassium chloride. फोर्थ, बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री अल्कोहल, पोटेशियम सल्फेट. इसका सही आंसर क्या होगा? बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड पोटेशियम सल्फेट. फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज राइट. नेक्स्ट देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन. आयरन की लिमिट टेस्ट देखेंगे. इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन फेरस आयन. फेरस आयन and thioglycolic acid plus thioglycolic acid in presence of ammonia and citric acid. In presence of ammonia and citric acid to form ferrous thioglycolate complex. To form ferrous thioglycolate complex which appears as पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर. अब हम रिएक्शन देखेंगे. फेरस आयन Fe2 प्लस thioglycolic acid 2HCH2COOH in presence of citric acid and ammonia. It gives ferrous thioglycolate complex. नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट सैंपल एंड स्टैंडर्ड सैंपल. टेस्ट सैंपल इज डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर. देन वॉल्यूम इज मेड अप टू 40. स्टैंडर्ड में क्या यूज़ करते हैं? 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आयरन डाइल्यूटेड विथ वाटर अप टू 40 ml. देन टेस्ट सैंपल में ऐड 2 ml ऑफ 20% WYV of citric acid. Same standard में भी add 2 ml of 20% WYV weight by volume of citric acid. Then test में add 2 drop of thioglycolic acid. Same standard में add 2 drop of thioglycolic acid. Then add ammonia to make the solution alkaline and adjust the volume to 50 ml. Same standard में भी अमोनिया ऐड करते हैं. Keep aside for 5 minutes both. Color developed is view and compared with standard solution. Observe the turbidity and compare. If turbidity produced by test sample is less, turbidity test की less हो, then standard sample, the sample passes the limit test. If turbidity produced by test sample is more than standard sample, the sample fails. Turbidity less हो then standard, then passes. Turbidity more टेस्ट सैंपल की then fails the test. अब हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे. Which of the following is not used in iron limit test? Not used in iron limit test. First, lactic acid. Second, thioglycolic acid. थर्ड, साइट्रिक एसिड. फोर्थ, अमोनिया. तो थायोग्लाइकोलिक एसिड में क्या यूज़ नहीं करते? इसकी रिएक्शन देखेंगे. फेरस आयन प्लस थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड एंड अमोनिया. इट गिव्स thioglycolate complex. थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स. इसमें क्या यूज़ किया है? लैक्टिक एसिड यूज़ किया है? नहीं. थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया है. ये थायोग्लाइकोलिक एसिड. देन साइट्रिक एसिड, अमोनिया. इसका सही आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड. फर्स्ट इज करेक्ट.
थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ, अभी हमने देखा था। लिमिट, फर्स्ट ऑप्शन है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, सेकेंड है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, थर्ड है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, फोर्थ है लिमिट टेस्ट फॉर लीड। सही आंसर क्या होगा? लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। थर्ड, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, आयरन रिएक्ट विथ डैश डैश रिएजेंट। इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन थायोग्लाइकोलिक एसिड, सेकेंड अमोनिया, थर्ड साइट्रिक एसिड, फोर्थ ऑल। आयरन फेरस आयन रिएक्ट विथ, हमने देखा था, थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड अमोनिया, इट गिव्स थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, थायोग्लाइकोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैरामीटर यूज्ड इन लिमिट टेस्ट। कौन कौन से पैरामीटर यूज करते हैं? फर्स्ट ओपेलेसेंस, सेकेंड टर्बिडिटी, थर्ड कलर, फोर्थ ऑल। इसका सही आंसर होगा ऑल। ओपेलेसेंस, टर्बिडिटी, कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पर्पल कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फेरस सल्फेट, सेकेंड फेरिक थायोग्लाइकोलेट, थर्ड ग्लाइकोलेट आणि फोर्थ ग्लाइकोलिक एसिड। इसका सही आंसर है सेकेंड, फेरिक थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। सिक्स क्वेश्चन, इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, interfere of other metal, cation is removed by. In limit test of iron, interfere of other metal, cation is removed by. First citric acid, second thioglycolic acid, थर्ड अमोनिया, फोर्थ अल्कोहल। इसका सही आंसर है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज रिएक्टिंग विथ डैश डैश टू फॉर्म आयरन। क्या क्वेश्चन है? इन केस ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज रिएक्टिंग विथ डैश डैश फॉर्म टू फॉर्म आयरन। फर्स्ट फेरस, सेकेंड फेरिक अनाइड्राइड, थर्ड फेरस आयन, फोर्थ ऑल। सॉरी, इसका सही आंसर होगा फेरस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट, फेरस थायोग्लाइकोलेट इन एसिडिक मीडियम। फर्स्ट ग्रीन, सेकेंड ब्लू, थर्ड येलो, फोर्थ कलरलेस। इसका सही आंसर है फोर्थ कलरलेस।